Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Waqar Zulfikar Sangi, and on the platform of Rising Pakistan Institute, I welcome you all in the teaser of current and Pakistan affairs past paper session. In this video, we would discuss the structure of our entire workshop. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में कमांड वर्ड्स की क्या हैसियत होती है। अच्छा, कमांड वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कमांड वर्ड्स काफी अरसे से पास्ट पेपर्स में आते रहते हैं। 2017 में तो सारे ही जो सवाल आए हुए थे सब में कमांड वर्ड लगा हुआ था, लेकिन कमांड वर्ड क्योंकि अभी मार्केट में काफी ट्रेंडी चल रहा है, आई कॉल दिस मार्केट ऑफ द सीएसएस, काफी चीजें आजकल ट्रेंडी हैं, तो उनमें ये कमांड वर्ड्स भी बड़े ट्रेंडी हैं। लेकिन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, लेट मी क्लियर द मिथ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड्स। कमांड वर्ड्स की कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती आपके जवाब में, क्योंकि आप जो भी जवाब लिखेंगे एग्जैक्टली वो आपका जवाब ही होना है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल फ्लॉ आ जाता है। हम उस स्ट्रक्चरल फ्लॉ को आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वी वुड डिकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करने का क्या फायदा है? पेपर में जब आप बैठे हुए होते हैं तो 35 मिनट में आपने पूरा एक सवाल करना होता है। व्हाट आई बिलीव दैट के एस्पायरेंट के पास एक पूरा हेडर्स का बैंक होना चाहिए, ताकि वो कंफ्यूज ही ना हो। कोई उससे पूछे इम्पैक्ट्स ऑफ सी पैक एंड द रीजनल सिक्योरिटी, 1 2 3 4 5 डन। कोई उससे पूछे व्हाट आर द न्यू वेव्स, न्यू ट्रेंड्स इन पाक यूएस रिलेशंस इन बाइडेन एरा, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी। तो अगर उसके पास एक डेटा का बैंक होगा तो वो जल्दी जल्दी से उनको पुट करके, उनकी एक्सप्लेनेशन देके, उनका रेलेवेंट रेफरेंस देके अपनी जान छुड़ा सकता है। तो इन दिस वर्कशॉप हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा हेडर्स देते जाएं, ताकि आप उनको अपने आंसर्स में यूज करने की कोशिश करें। सेकेंडली, हम आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट को डिवाइड करना होगा, किस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट को ऊपर रखना होगा, या फिर हम आर्ग्यूमेंट को लेस इंपॉर्टेंट समझ के स्किप कर दें, या फिर आर्ग्यूमेंट को बनाने का सही तरीका कैसे हो सकता है। एक फ्रेजल वर्ब का एक फ्रेजल आर्ग्यूमेंट हो आपके पास, एक एक्सप्लेनेटरी आर्ग्यूमेंट हो आपके पास। तो हम ये सारी चीजें भी इसमें समझने की भरपूर कोशिश करेंगे इस वर्कशॉप में। फिर उसके बाद वी वुड बी लर्निंग द डिफरेंट डिस्कोर्सेज ऑफ योर आंसर राइटिंग, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एनालिसिस एंड एवरीथिंग। एंड देन वी वुड जस्टिफाई द बर्डन ऑफ प्रूफ, कि कितना डेटा किस पार्ट में देना चाहिए और कितना हमारे पास जो मटेरियल है, हम एक आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि 20 मार्क्स पूरी डिवाइडेड हो जाए। क्योंकि काफी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो बातें पूछी जाती हैं, 10 मार्क्स में हम उसको डिवाइड करना सीखेंगे और हम बड़ा इजी तरीके से उनको पूरा करने की भी सलाहियत हासिल करेंगे इसी वर्कशॉप में। उसके बाद वी वुड अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ मोल्डिंग नॉलेज, किस तरीके से आप एक छोटी सी डेटा को हर जगह यूज कर सकते हैं, हम थोड़ा इस पे भी नजरसानी करेंगे। उसके बाद in today's teaser workshop, I have kept 3 questions of Pak affairs and 3 questions of current affairs as to tell you कि हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। आप पास पेपर्स अपने साथ ले आएंगे वर्कशॉप में, आप किसी भी ईयर से पास पेपर उठा के 2015 से 2021 तक ले आएंगे। हम उनमें से ऑन द स्पॉट सारे सवाल हल करने की कोशिश करेंगे, सारे डिस्कोर्सेज सीखेंगे और सारे कमांड वर्ड्स को साथ ही प्रैक्टिस करते हुए आएंगे। तो without any further delay, let us move towards our demo 3 questions of Pakistan affairs. Command words की ये कुछ explanation है आपके सामने, you can understand that as well. ये मैंने आपके सहूलत के लिए यहाँ पे रखी हुई हैं। The video would be on the pages, ताकि आप लोग इसको खुद से भी देखें। अच्छा जी, तो पहला सवाल हमारी डिबेट का जो आज स्टार्ट होता है, that is critically analyze the causes of delaying of the construction of dams in Pakistan. Give some suggestions to revert this collateral loss. अब क्रिटिकली एनालाइज को समझते हैं सबसे पहले कि क्रिटिकली एनालाइज क्या है। देखें, क्रिटिकल एनालाइज जब भी आपके पास आता है सवाल में, तो ये मेरी बात आज समझ लें आपके पास स्टोरी के 2 रुख होने हैं। एक आपका होगा पॉजिटिव साइड, एक आपका होगा नेगेटिव साइड। या आपके पास होंगे कन्वर्जेंस या आपके पास होंगे डाइवर्जेंस। तो इन चारों चीजों में से वो आपसे बेसिकली 2 चीजें पूछने की कोशिश कर रहा है। या तो आप उसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताएंगे, या तो आप उसे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड बताएंगे। एक और टिप मैं आपको दे दूं, जब भी आपके पास सवाल में क्रिटिकल एनालाइज आ जाए तो समझ लें कि सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है या टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब जैसे 2017 में एक सवाल आया था
critically analyze the outcomes of national action plan. अब national action plan is a complete failure. It is admitted by the state even. लेकिन हम उसको completely failure नहीं कह सकते because strategic point of view it was very successful. मदरसे भी enroll हुए थे, SIM cards were also enrolled with the authority and under the authority of the PTA. लेकिन काफी लोगों के लिए मसाइल भी पैदा हो गए, सिविलियंस के लिए प्रॉब्लम हो गए. तो जब भी आपके पास थोड़ी भी कंट्रोवर्सी आ जानी है तो हम क्रिटिकल एनालाइज यूज करते हैं. तो अब क्रिटिकल एनालाइज को हम किस तरीके से डील करेंगे इसको समझते हैं. लेट मी इरेज द मैस ओवर हियर ऑन द स्क्रीन. अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देना है. यू वुड बी टेलिंग दैट इन दिस इंट्रोडक्शन कि आप क्या बताएंगे. द टू केसेस in the causes of the delaying of the dams are provinces in the favor and governments against. अब जब भी क्रिटिकल एनालाइज आता है आपके पास सिक्के के दो साइड्स हो जाते हैं. अब इस सवाल में मैं क्वाइन की एक साइड को गवर्नमेंट रखूंगा और क्वाइन की एक साइड को मैं प्रोविंसेस रखूंगा, क्योंकि स्टेट चाहती है कि हम डैम्स बनाए, लेकिन प्रोविंसेस की रिफ्ट की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से डैम्स डिले हो रही हैं. सो दिस इज हाउ वी वुड डिवाइड आवर टू साइड्स इन दिस क्वेश्चन. फिर उसके बाद you would tell the critically analyzing the key causes in the delaying of the dams in Pakistan, the case in favor, or you can say the case by the provinces of the Pakistan, the reservation of the provinces in building new dams. फिर पंजाब की reservations आप बताएंगे. You can read the material. I should not be wasting my time in the teaser. फिर KPK की reservations हैं आपके सामने कुछ. फिर इन दी एंड आप जब एक साइड आपकी हो जाए, अब आप आएंगे अपनी दूसरी साइड पे. अगेन द कॉजेज ऑफ नॉट बिल्डिंग न्यू डैम्स इन द कंट्री एज द लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल विल, द केस अगेंस्ट द प्रोविंशियल रिजर्वेशंस. फिर उसके बाद आप ये बताएंगे इसमें कि द गवर्नमेंट इज अनएबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस एंड रिफ्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस, short-sighted approach adopted by the successive governments, financial constraints became the cause of the delay, lack of political consensus on the construction of the dam, the shortage of skilled and miscalculated time estimation for the completion of the projects, the limitations of the Council of the Common Interest under the Constitution of 1973, weak government bodies to foresee the water challenges to the country. अच्छा जी, फिर आपके पास वे फॉरवर्ड आ जाना है. वे फॉरवर्ड में आप ये बताएंगे कि there is a need of creating a political consensus on the issue, trust among the provinces should be regenerated, improvement in the economy is required to meet the financial needs of the construction of the dams, strengthening the Council of Common Interest, long-term policies are required to carry out the plan successfully, capacity building of the institutions should be strengthened, proper research should be concluded before deciding the areas of the dam, proper adjustment of the masses in order to avoid the social turbulence, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो फिर उन्हीं गांव वाले लोगों में होगा अगर कलाबाग डैम या फिर कोई भी डैम बनता है तो. एंड देन प्रॉपर टाइम एस्टिमेशन एंड स्किल्ड लेबर्स कंक्लूजन. वल्ला आंसर इज रेडी नाउ. अच्छा, अब जो लोग कीवर्ड को एनालाइज करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, वो भी यही तो बताएंगे, वो भी यही रीजंस बताएंगे कि प्रोविंशियल रिफ्ट्स हैं, ये हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, पैसा नहीं है मुल्क में. इवेंचुअली दे वुड टेल द सेम, लेकिन मसला क्या है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है आंसर में कि भाईजान ये प्रोविंशियल ग्रीव्स हैं, ये आपके पास सेंटर की ग्रीव्स हैं, ये मेरे सॉल्यूशंस हैं, बात खत्म करें, अल्लाह हाफिज. अच्छा जी, दूसरे सवाल पे आ जाते हैं. दूसरा सवाल है आपके पास, write note on Afghan war since 1979 and its impact on Pakistan. How far the emergence of non-state actors and the non-traditional security threats in Pakistan can be attributed to the decade-long warfare in Afghanistan. ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, इसको भी कर लेते हैं हम, 2 मिनट का काम है. इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप सबसे पहले. अब इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका एक्सपोजिशन पैराग्राफ होगा यहाँ पे, उसमें आप जेनेसिस ऑफ द वॉर बताएंगे, द लास्ट चैप्टर ऑफ द कोल्ड वॉर बताएंगे. अब ये होगा आपका वैसे एक पैराग्राफ, लेकिन इसमें मैंने डिटेलिंग आपको ज्यादा उसलिए देनी है ताकि आपके पास एक रेलेवेंट डेटा हो. सी, अभी द मेन पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप, अब ये हम कराने का पर्पस ये भी समझ लें कि this is a workshop in which an aspirant is talking with the aspirants. I've been an aspirant myself. I know what are the pains and suffering an aspirant sees in his
or her life, and this is how I play my part in helping you guys. I'm not here to give knowledge, I'm here to only tell you the way towards your journey, towards your destination. इंशाल्लाह सबको ये अल्लाह कामयाब करे. फिर इसमें आप बताएंगे सॉर रेवोल्यूशन इन अफगानिस्तान, एनिमिटी एंड द सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान, rising face of socialism and influence of USSR in the South and Middle East region proved to be a regional threat, not just for Pakistan, but for the entire region. And then initiation of the insurgency, global players, आपको पता है कि role of India सबसे ज्यादा रहा है in Afghanistan. And then CIA's backing of Pakistan army and starting of the Afghan jihad, USSR loss in Afghan jihad culminating into the fall of the USSR, USA leaving Pakistan with all terrorism and refugee crisis. अब आएंगे हम अपने सवाल के दूसरे पार्ट पे. अब राइट द नोट तो हमारे पास हो गया, अब आएंगे हम अपने सवाल के दूसरे पार्ट पे, विच इज अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान. अब द इम्पैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान को मैंने दो पार्सल चीज जो पूछी गई है, अब ये तो आपका पूरा एक ही पैराग्राफ हो जाना है, सेकंड पैराग्राफ. अब आएंगे इम्पैक्ट्स पे. So the impacts on Pakistan, the spillover effect of Afghan jihad. Number one, compromised border security and rising insurgent movements in Pakistan. Pakistan became the hotspot of transnational actors, footprints of TTP and Al-Qaeda. Sectarian feuds and rise of extremism due to Islamization and exponential growth in the madrasas. They were funded by the Iran and Saudi Arabia at the same time. Grave loss of life and economic in Pakistan. More than hundreds and thousands of the people were lost and billion-dollar infrastructure also was lost. Then आपके बाद आ जाता है army public school attacked by the TTP. Nearly 50,000 army personnel lost their lives in anti-terror operations and additional weight on the already weak economy. And then you would write the emergence of the non-state actors which were attributed to the Afghan-Soviet conflict. उसमें आप बताएंगे the advent of Quetta Shura, terrorism steeping in Pakistan, Tehreek-e-Taliban Pakistan, a fraction of Taliban terrorizing Pakistan, rise of Jaish-e-Mohammed and Haqqani network, ruthless guerrilla terror organizations, Lashkar-e-Taiba, growing seed of extremism and sectarianism, indirect funding by Indian and other states in Pakistan to the non-state actors to destabilize Pakistan. अब आते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे. अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके कौन से थ्रेट्स होते हैं जो आपके ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा हो जाते हैं. योर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द स्टेट थ्रू स्ट्रेटेजिक मींस, बॉर्डर्स, एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर मोर ऑफ अ ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आपके अब सिक्योरिटी पॉलिसी में भी इंक्लूड किए गए हैं. अब इसमें नंबर वन, ड्रग इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लक्स ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, human trafficking, fewer ever increasing number of Afghan immigrants posing threat to the national resources of Pakistan, weak economic opportunities for Pakistanis, global image has lost as well, loss of infrastructure and the FDI, no or very small tourism due to the terrorism in the side of the Pakistan. फिर आपके पास कंक्लूजन हो जाएगा. सवाल हो गया आपका. अब आते हैं दूसरे सवाल पे. सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थ्रू अ ट्रेजिक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री वाज नॉट द नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी. अब इसमें पूरा आपने स्टेटमेंट को समझना है कि वो आपको ये कहना चाह रहा है कि जितना भी ईस्ट पाकिस्तान का जो ट्रेजिक इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हुआ है, इट वाज नॉट द नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी. देयर वर सम अदर रीजंस. टू नेशन थ्योरी हैजंट फेल्ड येट. अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे. अब कमेंट यहाँ पे आ गया. अब कमेंट का क्या मकसद है? यहाँ पे आप किसी भी चीज पे जब अपना तजिया देते हैं, आप अपना कमेंट पास करते हैं, तो वो कमेंट आ जाता है उसमें. अब इस वाले पार्ट में आप किस तरीके से कमेंट करेंगे? आप ये कमेंट करेंगे कि टू नेशन थ्योरी नेगोशिएशन, टू नेशन थ्योरी. अच्छा जी, अब आपके पास एक और सवाल आया था पास पेपर में. द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थ्रू अ ट्रेजिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट द नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी. कमेंट. अब इस पार्ट में आपका जो कमांड वर्ड है वो कमेंट है. अब दिस इज द इजीएस्ट पार्ट. कमेंट इज वेरी इजी. कमांड वर्ड, इसमें आपने सिर्फ ये एक केस पुटअप करना होता है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं सही. क्योंकि जब भी फेसबुक पे आप कमेंट करते हैं तो या तो आप अपना
एलिजेंस देते हैं कि हाँ भाई आप ठीक कर रहे हो, या तो आप फिर निगेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो हम इस सवाल को निगेट करेंगे, क्योंकि ये बात हकीकत भी है कि टू नेशन थ्योरी की वजह से वो डिबेकल नहीं हुआ था, उसके बाकी सारे सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस थे। तो हम उन इकोनॉमिक रीजंस को हाईलाइट करेंगे, लेकिन उनको हाईलाइट करने से पहले टू नेशन थ्योरी पे जरूर आएंगे। इंट्रोडक्शन होगा हमारा, उसके बाद हमारा होगा जेनेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब वैसे एग्जाम में तो आपने इस पे एक ही पैराग्राफ लिखना है, लेकिन आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्लियर करता चलूं कि टू नेशन थ्योरी हैज सो मेनी फेजेस एंड फेसेस, फ्रॉम सर सईद अहमद खान to from Sheikh Ahmad Sarandi to Sir Saeed Ahmad Khan. This was the first phase of two nation theory. उसके बाद फिर जिना's concept of saving Islam from Hindu domination. This was the second image of two nation theory. फिर इकबाल का reconstruction of Islamic thought and the prevalence of two nation theory in post Congress elections of 1937. यानी इन इवेंट्स में टू नेशन थ्योरी एक प्रॉपर तरीके से मोल्ड होती हुई आपको नजर आ रही है। फिर लियाकत अली खान के एफर्ट्स आपके सामने हैं, the objective resolution, and then Ayub's efforts of modernizing and industrializing the economy of Pakistan. It was actually strengthening the country with the spirit of two nation theory with the elements of some Western civilization. हम उसमें हमने वेस्टर्नाइजेशन देखी सोसाइटी की, पूरी एक मॉडर्नाइजेशन आई, लेकिन टू नेशन थ्योरी फिर भी जिंदा ही रही। लेकिन फिर भुट्टो के लिबरल एफर्ट्स ऑफ Islamization of the society to save the two nation theory. Now this है आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है भुट्टो's liberal efforts of Islamizing the society to save the two nation theory, the sixth phase of the theory. And then again the debacle of East Pakistan. This is the stage where we needed to revisit the theory, the final stage of the theory, that now religion solely cannot hold the country together. आपने स्टेट को भी सेटिस्फाई करना होगा। सिक्योरिटी स्टेट होना इज नॉट द आंसर, बट प्रोवाइडिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स टू द सिटीजन इज द आंसर इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। फिर आपके पास मोदी एंड कश्मीर क्राइसिस आ जाएगा, जिससे आपकी वैलिडिटी होती है टू नेशन थ्योरी की, कि सर सैयद अहमद खान, शेख अहमद सरंदी, जिना, इकबाल, लियाकत, अयूब, भुट्टो ऑल वर राइट अबाउट द टू नेशन थ्योरी। फिर इसके बाद आप जाता है आपका आएगा कि ओरिजिनल फैक्टर्स दैट एक्चुअली वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिबेकल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा द ड्राथ ऑफ द विजनरी लीडरशिप, the role of India in infiltrating the insurgent movements in East Pakistan, the non-democratic forces in East Pakistan that actually started revolt against the state of Pakistan, language rights. Even Jinnah categorically went to the Bengali students and told them that Urdu should be the national language, yet they defied that. Third, the issue of the provincial autonomy, and then the meager marginalization was named as identity crisis of the wing by the foreign intruders backed by the raw. Critically analyzing the relevance of two nation theory in post debacle era, ये आपका फिर आखिरी सेकंड लास्ट हेडर हो जाएगा। इसमें आप बताएंगे कि टू नेशन थ्योरी के बावजूद भी उन्होंने किस तरीके से अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी रखना पसंद की। बीइंग मुस्लिम वाज रिलीजन टू देम, but their separate identity of their cultural outlook was very different. The Bengalis maintained their separate identity. They portrayed themselves as separate nationalism. They even the disintegration was on internal basis only. It had nothing to do with the religion or the two nation theory. Had Bengali leaders had our leaders accommodated the Bengalis, Dhaka would have not been a debacle or a tragic tale. Here, theoretical foundations of the two nation theory are still on their position, and then it would be your conclusion. अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है highlight the role of National Action Plan NAP in stabilizing the internal security of Pakistan. Critically analyze its outcomes. देखें वही बात आ गई कि outcomes को critically analyze करें, कि यानी outcomes are controversial over here. So either we have to tell divergence or convergence in the outcomes, or the positive outcomes or the negative outcomes. लेकिन यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हम इसमें negative और positive outcomes बताएं। अच्छा जी, तो ये सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें दो कमांड वर्ड्स हैं आपके पास। नंबर वन इज योर हाईलाइट, जिसमें आप हाईलाइट करेंगे सक्सेसेस
या फिर हाईलाइट करेंगे द मेन इवेंट्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर आपके पास दूसरा पार्ट आ जाता है यहां से, जिसमें आपसे वो पूछेगा क्रिटिकली एनालाइज, यानी आप आउटकम्स को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से डिफाइन करें। अच्छा जी, तो ये इस सवाल को आगे करते हैं। You can start with the question by the great words of great Noam Chomsky. Everyone's worried about stopping terrorism. Well, there is really an easy way. Stop participating in it. उसके बाद फिर आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे assessing, the second paragraph would be about the assessing the role of the national action plan in stabilizing the country, in internal stability, fighting terror with terror. Secondly, आप डायरेक्ट अपने आंसर पे आ जाएंगे उसके बाद, एनालाइजिंग द आउटकम्स ऑफ एनएपी, द पॉजिटिव साइड, nominal success. NAP played a positive role in crushing terrorism by establishing counter-terrorism force units and operations, जिसमें आपके पास रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़ब का एक एग्जांपल है. It enabled military leadership to be on the same page to curb the menace of terrorism and militancy. NAP brought successful outcomes in bringing major terrorist outfits such as Tehrik-e-Taliban to knees, expelling considerable number of Afghan refugees, the execution of the death sentences to the prisoners, and verification of more than 70 million SIMs by Pakistan Telecom Authority. ये हो गई आपकी कॉइन की एक साइड, द पॉजिटिव आउटकम्स. अब आते हैं नेगेटिव आउटकम्स पे. यू कैन स्टार्ट द नेगेटिव आउटकम्स विद द ब्यूटीफुल कोट ऑफ मलाला यूसुफजई, विद गन्स यू किल टेररिस्ट एंड विद एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म. Analyzing the outcomes of NAP, the negative side, establishment of the military courts had hampered and questioned the validity of the civilian justice system. The military got greater role in formulating foreign policy, formulating the internal policy of the state. Eliminating madrasas in the country has given birth to the radical elements in the society. Pakistan got stuck with the USA-led war on terror, and with NAP, Taliban's had all eyes on Pakistan. Extremist fraction in the society grew at the faster pace in post-NAP Pakistan, क्योंकि मदरसास के बाद एक्सट्रीमिज्म राइज ही होनी थी. अच्छा, इम्पीचमेंट्स इन द वे ऑफ एनएपी, कौन कौन से इम्पीचमेंट्स हैं? अगर आपके पास सवाल आ जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए कि व्हाट आर द इम्पीचमेंट्स इन द वे ऑफ national action plan or the internal security of the Pakistan, you can use these 5 headers there as well. Extremist fraction in the society of Pakistan failed to achieve the target of madrasa reforms, and object of countering hate speech is disintegrated or disregarded. Unlawful procession of the hate preachers. The terror sponsoring yet continues, which eventually has led Pakistan being on the grey list of FATF. Banned organizations are still operational under new names. Conclusion, you can conclude with the words of Howard Zinn: how can we have a war on terror when war itself is a terrorism? So in short, the entire solution is investing in human development. आपके पास जो दूसरा सवाल आता है वो आता है कि critically examine China's strategic vision behind its One Belt and Road initiative. अच्छा, तो इसमें जो कमांड वर्ड आपके पास आता है क्रिटिकल एग्जामिन आता है. क्रिटिकल एग्जामिन इज अ वेरी सिंपल कमांड वर्ड. इट इज एक्चुअली अ डॉक्टर पेशेंट डिबेट, जिसमें एक डॉक्टर पेशेंट से सिर्फ हाल हवाल करता है, उससे सिर्फ बातचीत करता है, पूछता है कि हाँ भाई जाना ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, अच्छा उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये प्रिकॉशंस लोगे तो बचत हो जाएगी. अच्छा, तो हम इसको समझते हैं. अब हम चाइना को एज अ पेशेंट ट्रीट करेंगे और खुद को डॉक्टर ट्रीट करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो चाइना बताएगा डॉक्टर को कि दिस इज माय $1 billion इनिशिएटिव, and then the doctor would be asking, so how you have been conducting your $1 billion initiative? What is actually the strategic vision of the BRI? The China's answer would be theory of heartland and rimland. The one who rules the waves rules the world. One who rules the Europe rules the world. फिर securing the sea lengths of communication, securing the energy choke points, lesser dependency on external state actors, materializing the dream of a string of pearls, countering Malacca dilemma, the alternative routes. फिर आपके पास आ जाएगा डॉक्टर अगेन सवाल पूछेगा चाइना से ही कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. तो चाइना का जवाब होगा एशिया फॉर एशियंस, era of regionalism, new globalism with the spirit of Chinese regional order, Beijing consensus to counter capitalist monopolies of USA, the alternative institution to reduce the reliance on the US. फिर
डॉक्टर कहेगा कि मसले तो काफी हो सकते हैं, फिर चैलेंजेस कौन कौन से हैं आपके पास? Chinese reply again to the challenges will be Indo-US nexus is the biggest challenge in the implementation of the BRI. Terrorism in the region, USA covert and hybrid warfares in the region. Critically analyzing Chinese. अब यहाँ पे आपका सवाल तो पूरा हो चुका है, अब क्रिटिकल एनालिसिस का आप एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ दे के पाकिस्तान को सवाल में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि देयर शुड बी अ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द सी पैक एज वेल एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी इक्वेशन would be the should be the core of the strategic vision of the CPAC. Conclusion हो गया सवाल। दूसरा सवाल आपके पास आ जाता है, what will be the strategic and political implication of the US withdrawal from the Open Skies Treaty and how it is impacting the arms control arrangements between the great powers? बड़ा सिंपल सा सवाल है, सीधी सीधी बातें हैं इसमें कि क्या है वो ट्रीटी और क्या क्या इम्पैक्ट्स होने हैं। इंट्रोडक्शन होगा आपके पास, what is Open Sky Treaty and its need for the disarmament, Cold War and bipolarity of the world strategic and political outlook, the rise of liberal internationalism and the emergence of ILO, the concept of a mutual assured destruction, MAD, the change in the Soviet radical ideologies. The impact of US withdrawal from the Open Sky Treaties: number one, the race for the space wars would gear up. Formation of new blocks to counter international limitations for nuclear weapons, air blockade and humanitarian crisis. The move would open new arenas of the warfare, supersonic missiles, AI jets, and etc. The airspace would turn up to be the new dichotomy of us versus them. Open Skies Treaty's refusal would hamper the global policing role of the USA and will create a power gap for new powers to come in. Again, जो उसका आखिरी पार्ट होगा, the future of disarmament in the backdrop of the US withdrawal, the move can favor non-state actors to take advantage in the post-Skies Treaty era. The move would give rise to the alternative institution, SCO versus versus the UN. Multilateralism would die its own death by preferring unilateralism. Biden would trigger the wave of mistrust among the great powers. Human security would become a distant dream in the era of nuclear armament, traditional security threats to sit on the global driving seat of the affairs. It would give rise to the revisionist state agendas, Russia and India. Russia का आप example Ukraine का quote भी कर सकते हैं. It would be the end of the complex interdependency. Critical analysis and conclusion. We are done with our demo and the teaser. These are few upcoming workshops. We are going to conduct essay workshop under the guidance of Mohammad Shareef, PSP. He is a remarkable teacher and he is known to be the doctor of the essay. हम essays को thematic approach में कर रहे हैं ताकि आपको themes भी cover होते जाए। फिर उसके बाद we have composition session by Rizwan Memon, PAS, very wonderful and brilliant teacher. Composition के sessions की बड़ी जरूरत भी है। फिर उसके बाद we have a collaboration of international relations with Mohammad Shareef and myself, Waqas Zulfikar Sanghi, जिसमें हम international relations का part 1 कराएंगे। ये क्लास 7 से 11 बजे तक चलनी है। 7 से 9 बजे तक शरीफ साहब आएंगे, फिर 9:30 से 11 बजे तक मैं आ जाऊंगा। ये जो वर्कशॉप है ये हम IR 1 का कर रहे हैं, इसके बाद हम IR 2 पे आ जाएंगे। So ladies and gentlemen, this was all for today. If you have any other questions, you can pop up a message on our Facebook, Instagram, WhatsApp, or you can just comment on the video as well. Thank you so much. It is an honor serving you guys. Allah Hafiz, दुआ में याद रखें।